Good morning, students. Welcome you for all to the class. I'm sorry to be late. I got confused, so please bear with me and thanks for waiting. Okay, so we have already completed arithmetic session here. Okay, and we are starting with a new chapter today. Welcome you all to the class and good morning once again. So, you are all ready to set for a new chapter, right? So let's begin with our geometry concept. Our very first geometry concept in class 10, what we are talking about is triangles. As you can see the figure also. Okay, but here we are going to learn bit different till now whatever you have learned. Okay, so first let's revise the concept what you have learned so far, and then we move on for the next one. Okay, so if I tell you I've got two triangles here. Okay, I have cut it in such a way that when I fold it from here, you could see the triangles put on one another. You can see a bigger triangle. If I fold it from the middle, okay, you could see that both of it, both the triangles can fit one on the other. Like you could see their edges are meeting each other, isn't it? Even with this edge, meeting the other edge. Okay, so if I cut it from here, I get two equal triangles, isn't it? You could see the points and the edges are meeting each other, overlapping each other, or coinciding each other. You've seen that. So which word you have learned before for this? Could anyone give the comment quickly? I'm waiting for your comments. I said when you have two triangles, okay, such that it overlaps each other, isn't it? It overlaps. Yes, Pulkit, very correct. Yes, it's congruent triangles, and you all have learned congruence of triangles. So, are you aware of what is congruent triangles? The definition of congruent triangles: two triangles are said to be congruent if their corresponding sides and angles are congruent to corresponding sides and angles of another triangle. Okay, so as you are aware that you have learned it in lower classes that there are parts of triangles, and which are the parts of triangle? The sides and the angles are called the parts of the triangle. And the second word is corresponding. So when we talk about, if I name two triangles here and say another triangle, so if I draw like this, say this is triangle ABC and this is triangle MKL, okay? And if I use this corresponding, that ABC is corresponding to LKM. If this is the correspondence, this means that A will correspond to L, B is corresponding to K, and C is corresponding to M. That means when I talk about side AB of first triangle, okay, you will talk about LK of second triangle. If I talk BC of second triangle, then first triangle, then I talk about side KM of second. And same way, if I write CA, you will write here ML. This is called correspondence. Okay, so which is very, very important. Okay, so look at it, please. This is called correspondence. I hope you are aware of it. Any doubts on this, then please write the comment quickly. Point next. Quickly give the comments so that I understand. If you have any doubt further, we could discuss. Are you all aware about this congruent part? Right? You have already learned it. And in this, you have further learned about different types of congruence test. What were the congruence tests? Do you remember? Side test, side angle side test, then angle side test, and RHS test.
Okay, you remember that? What is it? Like exactly when we say that two triangles are congruent, equal. Okay, then instead of writing three sides and three angles, that is all six parts. Okay, instead of writing, we write any three parts. Yes, Celine, it is maybe ASA or AS. Some of the books write ASA, some AS. That's one and the same thing. Because you know that when two angles of triangle are equal, the third angle automatically becomes equal. Okay. So what I was talking that instead of writing 3 and 3 6 part, we can show any three parts are congruent. If any three parts of these two triangles are congruent, we can say triangles are congruent. I hope this is clear to all of you. I'm just repeating. What are these tests of congruence? Okay, why with this SSN angle? That if these elements, like maybe three sides or side angle side or angle AS or maybe ASA, okay, or right hand side, right hand side. What is this right hand? Do you remember what was it? Is it right hand side RHS? Do you remember RHS? Because you always go with your RHS rule, your physics thumb rule, isn't it? And you know LHS and RHS. But here, what is mean by right RHS? That is right. Okay, right, R for right everywhere. But H for what? Yes, it is meant for triangles, right angle triangles. And right angle triangle mein H stands for hypotenuse. So this is nothing but RHS test. That is, it means you, in right angle triangle particularly, if you show one side, one hypotenuse and right angle, obviously, then you can show the triangles congruent. मतलब कि 6 parts लिखने के बदले में हमें सिर्फ 3 parts लिखने, कोई भी 3 parts नहीं, specified 3 parts. Then we can say that triangles are कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो ये हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंस में, सीखा था. यस, आपको आता है. देन वी आर मूविंग ऑन टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा जरा सा हटके है इससे, जैसे काफी इजी है, बट दीज टू आर डिफरेंट. जैसे कि जब आप आपकी डे टू डे लैंग्वेज में किसी दो चीजों को देखते हो, ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मदर एंड द डॉटर. Okay, maybe the carbon copy of each other. They look, similar. Okay, they look same, and we say, oh, exactly same looking. Yeah, father and the son. Okay, and there is one example of two twins. Okay, look wise, ditto same. Okay, so now I'm introducing to the we are using the congruence as well as the new topic which I'm talking about. Okay, when we say the twins, the age is same, the biological features are same, and the age is also same, right? So we can that is congruence. But if I talk about the example of mother and the daughter, maybe they're looking same, but there is age factor, right? The one is elder one and the second is younger one. Maybe the father and the son, maybe two sisters, which are not twins. So these ones in mathematics they have the separate word called similar. Okay. Okay, so what is the difference with congruence and similar? Let's see that. Congruence means shape and the size is same. इतना simple समझ लो. फिर मैथ I mean we go to specific triangles. Congruent का मतलब है shape and size same. Whereas here only shape is same. समझ में आ रहा है? Only shapes are equal, but sizes will differ. I hope you got it. A very common example is your photograph. A miniature from आपने एक say 6x4 की frame करवाई, and then you go with your huge photograph. Suppose आपका आपके bedroom में रखना है, and you go with the 12x8 का size. The photograph is same, right? Only the copies is one big, one small. So here in this type of example, we see that both your photocopies are similar figures. Okay. So that is what we are introducing to similar figures. What do you mean by similar figures? They are equal in their shape, but their sizes are differing. Now differing means वहाँ पे भी एक specification है, but their sizes are proportionate. I hope समझ में आए. दो words मैंने बताया. The shapes are same. Shape same होगा, अलग नहीं हो सकता. Shapes are same, but their sizes are proportionate. Proportion का दूसरा आपने याद है रेशियो proportion क्या है, मतलब उनकी साइड्स जो होती है वो एक स्पेसिफिक रेशियो फॉलो करती है. आई वांट दैट अपार्ट फ्रॉम दिस फ्यू स्टूडेंट्स जिसने भी ये टॉपिक नया सीख रहे हैं वो मुझे आंसर करे या कुछ क्वेश्चन करे, कुछ भी डाउट हो तो
मोहित कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है कि जो जिसको आता है उसको पढ़ा रही हो, इन लोगों ने सीख लिया, वेरी गुड, दे आर आंसरिंग। पर आपको कुछ भी किसी को भी समझ में नहीं आता है, यू कैन पुट द क्वेश्चन, okay, and understand the concept, and this is totally different concept for you, so please pay attention. I hope this is clear to all of you. So we are discussing about similar figures. Okay, Joe, what is mean by similar figures? They are equal in their shape, but their sizes are proportionate. Fine. So you could see the triangles here. I put it. आप देख सकते हो यहाँ पे. Now this is my bigger triangle, isn't it? You can see this is bigger, and this is similar shape. You can say if I put it inside something like this, it comes like this. I hope you could see this, isn't it? Everyone. Okay. आप देख सकते हैं दो triangles है मेरे पास यहाँ पे. So if I put it inside, see, it comes inside, isn't it? The shapes are same. You could see triangular. Okay. I haven't taken this way. देखिए मैंने ये example ले लिया है. Could you see the shapes are same here? The shapes are totally different. I hope it is visible. The shapes are totally different. So I cannot compare this to triangle. But whereas if I take this, the shapes are equal. But if you will see, one is smaller, the other is bigger. And in this scenario or in this view, we can see that these two triangles are similar. I hope you get it. So we say that two triangles are similar if, now look at this, I'll show you something different. Okay, if I match up here, what do you get? See, this is my first triangle, the smaller one, and there's a bigger one. See, I put one above the other at this point. What do you see? What do you could see? The angles are matching, isn't it? Okay, look at this point. If I catch this here, I put it here. What do you could see? Could you see something? The angles, the points are overlapping, isn't it? The same. Okay, let's see the third one. Oh, this is also matching perfectly, isn't it? I hope this light it doesn't. You could see the two, and if I'm keeping one above the other, what do you say? What do you think? They are coinciding. So at the points they are coinciding. What are these points here? What is made here? When two sides are meeting each other, what do you say? What is made? Angle is made, isn't it? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मैं से इट इज कोइंसाइडिंग, ओवरलैपिंग, और जब ओवरलैपिंग होता है तो हम क्या कहते हैं? एंगल्स आर इक्वल. तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल क्या आ रहा है? दिख रहा है? यहाँ पे रखो तो क्या आ रहा है? एंगल्स आर कमिंग. क्या आ रहा है? एंगल्स आर इक्वल. यू कुड कमेंट ऑन दिस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कोई भी आप लोग प्लीज कमेंट्स लिखेंगे, मुझे खुशी होगी, बिकॉज it will give me the confidence that yes, you are learning. I don't want ki one or two children, those who know it very well, are writing the comments. I want those who are learning it for the first time. I'll be happy to see that you are learning exactly. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों में एंगल्स इक्वल आ रहे हैं. ओके, अब चलते हैं फिर से हम डेफिनेशन पे. तो जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, सिमिलर फिगर इज जनरलाइज्ड वर्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे आपका इंग्लिश में होता है, सिमिलर फिगर्स मतलब हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं. और जब मैं सिमिलर ट्राइंगल्स बोल रही हूँ तो नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स. तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. प्लीज ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग. पता है ना, यदि मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये और ये करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. सो ये यहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है. सो इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. समझ में आया? मतलब कि दो ट्राइंगल्स हैं जिसके तीनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंड साइड तो छोटी बड़ी है सब जगह पे, है ना? एंड their sides are proportionate. समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ. Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their sides are proportionate. Okay? So that's called similar triangles.
लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल. मैंने जैसे यहाँ पे दूसरा भी एक बनाया हुआ है. ओके, you could see the right angle triangle. ये मैंने इसलिए स्पेसिफिक लिया that everybody is familiar with right angle triangle, isn't it? शेप दिख रहा है आपको. तो सपोज ये मैं ऐसे इक्वल करने जाऊँ तो ये नहीं जम रहा है. ओके, तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट करना पड़ेगा? ऐसे. तो ये जो मैंने इस तरह से रखा था पहले, फिर मैंने ऐसे घुमाया, इसको हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डेंस. किसको किसके साथ मैच करना है वो हमें देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे. तो ठीक है, तो you could see here they will match. Okay, if I touch it with this part, obviously they are matching. Okay, you could see this 90 degree तो naturally यहाँ पे मैच करेगा और उसी तरीके से मैं यहाँ पे ले रही हूँ. So they are matching. Okay, देख सकते हो दो है. Yes. Okay, तो इसका मतलब हुआ these two triangles are similar to each other. Okay, अब मैं जाती हूँ फिर से जनरलाइज फिगर पे जाती हूँ. The two figures, कोई भी दो फिगर्स कब सिमिलर होंगे? When they are equal in shape. Okay, but their sizes are different or their sizes are proportionate. तो let's take about the common example circle. आप लोग concentric circle बना दो. Okay, आपने सारे सर्कल, तो आप देखोगे कि सारे सर्कल जो है सबका शेप तो सेम ही है, isn't it? जैसे ट्राइंगल्स में है, we have different type of triangles, but सर्कल तो सर्कल ही होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि all circles are similar figures, isn't it? कैसे हुआ ये? क्योंकि जब मैं सर्कल के डायमेंशन की बात करती हूँ तो उसमें एक ही डायमेंशन है रेडियस का, isn't it? तो एक ही वेक्टर है. तो नेचुरली जब एक मैं 3 सेंटीमीटर का बनाऊंगी, एक मैं 5 सेंटीमीटर का बनाऊंगी, तो उनका रेशियो क्या हो गया? 3:5. इसमें कोई एंगल का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, सिर्फ एक ही डायमेंशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, उसके बाद आती हूँ स्क्वायर पे. तो आप स्क्वायर में देखोगे तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही है, isn't it? एंगल वाला है इसलिए बता रही. तो एंगल्स इक्वल है तो शेप फिर से सेम हो गया, isn't it? तो सारे स्क्वायर्स आप देखोगे तो एक ही शेप फॉलो कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे डायमेंशन 2 है, पर जो दोनों डायमेंशन है इक्वल है, isn't it? साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल. इसलिए आपके सारे स्क्वायर्स सिमिलर टू ईच अदर. जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया या 4 सेंटीमीटर का बनाया, सो 3:4 उनका रेशियो हो गया हर साइड का. एक स्क्वायर है वो 3 सेंटीमीटर का है और एक स्क्वायर है वो 4 सेंटीमीटर का है. तो उसकी फर्स्ट साइड का रेशियो क्या होगा? 3:4. सेकेंड साइड का रेशियो 3:4. थर्ड साइड का रेशियो 3:4. फोर्थ साइड का रेशियो 3:4. हो गया. तो इट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स. तो क्या हमेशा ऐसा है? लेट्स सी विद रेक्टेंगल. अब मैं लेती हूँ रेक्टेंगल. As you know that rectangle has two dimensions, length and the breadth, which are different from each other. तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ दो रेक्टेंगल. Let's see how to do it. जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, so one rectangle I am taking it as, say this is 3 centimeter and this is 1 centimeter. Okay. अब दूसरा रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ. Okay, say this is 5 centimeter and 1 centimeter. तो अब यहाँ पे कोई रेशियो फॉलो हो रहा है. दो एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, बट कुड यू से दे आर सिमिलर? लुक एट इट. ब्रेड्थ का रेशियो क्या है? दोनों सेम है. वेयर एज लेंथ का रेशियो क्या हो रहा है? 3:5 और यहाँ हो रहा है 1:1. और इसीलिए these are not similar figure. If I say my figure A and figure B, that is rectangle A and rectangle B, ये सिमिलर नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इनकी साइज जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम रेशियो में होनी चाहिए. दैट मीन्स सपोज मुझे इसका सिमिलर रेक्टेंगल बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगी? See maybe 6 and 2 and now look at it. 3:6 डबल मैंने ड्रॉ किया. 1:2 डबल मैंने ड्रॉ किया. अब 3:6 को कट करके देखिए. 3/6 कट होके क्या हो गया? 1:2. और ब्रेड का रेशियो क्या है आपका? 1:2.
तो दोनों लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो सेम है, तभी वो रेक्टेंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर रेक्टेंगल के लिए डेफिनेशन क्या है? टू रेक्टेंगल्स आर said to be similar if their sizes are proportionate. It means उनके लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही रेशियो में होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज देखिए, कोई भी जो है, जैसे अब यहाँ पे ब्रेथ सेम है बट लेंथ का अलग रेशियो है, तो वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप उसको एक के अंदर एक नहीं, आप फिट करने जाएंगे तो वो एक के ऊपर एक या आजू बाजू कहीं बाहर निकल जाएगा, कहीं से उस तरीके से होगा। सो हियर this figure say this my figure A and figure C are similar figures, but my figure A and figure B are not similar figures. I hope this is clear to everyone. Please give me the comment if you are not understanding. कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि रेक्टेंगल्स कब सिमिलर होंगे? जब लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही रेशियो फॉलो करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है दोनों का रेशियो सेम होगा, तभी हम उसको सिमिलर रेक्टेंगल कहेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो उसी हिसाब से जब हम ट्राइंगल्स के लिए जाते हैं, मैंने कहा आपको पहले ट्राइंगल बता दिया है, पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमने ट्राइंगल समझे तो इस हिसाब से रेक्टेंगल में तो सिर्फ दो ही है, लेंथ एंड ब्रेथ, पर ट्राइंगल जो है उसमें तो तीन साइड्स हैं, isn't it? तो इसका मतलब ये हुआ that let's go with some geometrical proper figure. Okay, तो जब that triangle ABC is similar to triangle DEF, अब मुझे ये लिखना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF है, मुझे चेक करना है। तो एक तो ये सिमिलर, एक हर बार लिखना है, तो इसके बदले में हम कैसे लिखेंगे इसको? इसके पास भी सिंबल है, जैसे आपको पता है आपका कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये है, तो यहाँ पे सिर्फ ये अकेला सिंबल है। ओके, नीचे आपको लाइन मिल जाएंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके, सो दिस इज सिमिलैरिटी साइन। कब कब होगा? इफ, प्लीज याद रखिएगा, two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal। ये तो आपको इजी लगा होगा कि तीनों एंगल्स इक्वल है, तो ये आसान है। करस्पॉन्डिंग, तो एक इसको करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे डी को, तो यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है। देखिए कॉन्ग्रुएंस में ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि तीनों उसके साइड्स इक्वल आ रहे हैं। ओके, करस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ग्रुएंस एंड फॉर सिमिलैरिटी। ओके, पर वहां पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे यदि आप प्रॉपर करस्पॉन्डेंस यूज नहीं करोगे तो। ओके, सो यहाँ पे जब आपने ABC लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ DEF ही तो है। सपोज इफ आई चेंज इट से ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइज है AB वो किसको प्रोपोर्शनेट है? FD को है। पर हम जैसे कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका डायग्राम दिया हो मैथ्स में वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो विद दिस एग्जाम्पल, डेफिनेशन के साथ साथ करस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ए को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? F। तो यहाँ पे मेरा ये नेमिंग चेंज हो रहा है इस तरीके से, that A is corresponding to F, B is corresponding to D and C is corresponding to, यहाँ मुझे E रखना चाहिए, isn't it? So F D E, ये हो गया F D E। तो इसके हिसाब से एंगल A किसको इक्वल होना चाहिए? एंगल F को इक्वल होना चाहिए। एंगल B किसको इक्वल होना चाहिए? एंगल D को इक्वल होना चाहिए। और एंगल C किसको इक्वल होना चाहिए? एंगल E को होना चाहिए। Okay, so definition says two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their sides are proportionate। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए करस्पॉन्डिंग लेना, ठीक है, AB, तो जब मैं यहाँ AB वर्ड यूज करें तो मुझे यहाँ पे से फर्स्ट उठाना है FD, तो AB अपॉन FD इज इक्वल टू BC, तो इसका भी सेकेंड एंड थर्ड लेटर DE इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड AC, तो फर्स्ट एंड थर्ड F। अंडरस्टूड?
This is the definition of similarity of triangle, that two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their sides are proportional. तो आपने देखा होगा ये मेजर है यहाँ पे डिफरेंस कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. आपको ये बहुत ध्यान रखना है बिकॉज सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि बच्चे कॉन्ग्रुएंट लिख देता है. इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज सिमिलर. सिमिलर का मतलब है रेशियो ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल. ओके, सारी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब एनी टू रेशियोज टू बी इक्वल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन. इसमें कोई भी डाउट है प्लीज राइट डाउन द कमेंट. राज है, आई थिंक नकुल था, नुश्री थी. प्लीज राइट डाउन द कमेंट्स इफ यू आर नॉट गेटिंग इट. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए मुझे. ओके, आई थिंक सम अदर चिल्ड्रन आल्सो देयर अदर डिवीजन. आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड प्लीज आप पूछ सकते हैं. So this is the basic definition of similarity of two triangles between that, and further we go on with the test of similarity. Test of similarity मतलब क्या हुआ? जैसे आपने साइड टेस्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस में, राइट? आपने एसएस टेस्ट पढ़ा था, आपने एएसए टेस्ट पढ़ा था, आपने आरएचएस टेस्ट पढ़ा था. आपने कभी एएए टेस्ट पढ़ा था? आपने साइड टेस्ट पढ़ा है, तो आपने एंगल टेस्ट नहीं पढ़ा कभी. Did you notice it? आपने कभी भी एंगल टेस्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में नहीं पढ़ा था. क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल के, आपने ऑब्जर्व किया, देखिए कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है. एक सेकंड पहले मैं जाती हूँ कॉन्ग्रुएंस पे. ये दोनों ट्रायंगल जो मैंने फोल्ड करने पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, तो नेचुरली ये वाला जो इक्वल है एंगल वो इसका इक्वल एंगल है. अच्छा, इसका एंगल इक्वल कौन सा है? तो ये वाला इक्वल है. ओके, और ये वाले एंगल का इक्वल एंगल कौन सा है? ये है. तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल होता है तो उनके साइज और शेप दोनों इक्वल है, मतलब कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के से इक्वल हो रहे हैं. ओके, पर फिर भी जरूरी नहीं है. आपने एंगल टेस्ट कॉन्ग्रुएंस में क्यों नहीं पढ़ा है उसका देखते हो. मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ. ओके, इसलिए क्योंकि जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स इक्वल ही होंगे. आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एंगल्स बट दे आर वन इज स्मॉलर वन इज बिगर. तो जरूरी नहीं है कि जब तीनों एंगल्स दो ट्रायंगल के इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ही हो, वो उनका शेप आई मीन साइज भी सेम रहे, वैसा जरूरी नहीं है. और इसीलिए हमने कॉन्ग्रुएंस में एक टेस्ट नहीं पढ़ा है, बट यस हमारे सिमिलैरिटी में फर्स्ट टेस्ट हमारा आता है. ओके, दैट इज व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल सा है. Between two triangles have their corresponding angles equal है. corresponding सारे हमने बताया ना ये वाला. तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल्स के जब corresponding angles equal है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. और इसीलिए सिमिलर ट्रायंगल्स का फर्स्ट टेस्ट है शॉर्टर वाला अपना. The first test is angle test, जिसका हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं. हम इसी का मैक्सिमम यूज करेंगे, ठीक है? एंगल टेस्ट. और इसमें भी एक शॉर्टकट आ जाता है. क्या शॉर्टकट आता है? आपको पता है, आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की है, जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम फाइंड करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो आपको पता है टोटल कितना आना है 180 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली तीसरा वाला इक्वल ही होने वाला है. और इसीलिए ये तीन भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ए टेस्ट से भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. फाइन, तो वो तो हम सम्स करेंगे तब देखेंगे. फिर दूसरा टेस्ट आता है एस टेस्ट, यानी कि आपको तीनों साइड का रेशियो फाइंड करना है. फर्स्ट साइड का रेशियो फाइंड करिए, फिर सेकंड साइड का रेशियो फाइंड करिए, और फिर थर्ड साइड का रेशियो फाइंड करिए. यदि वो तीनों रेशियोस इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, हम सिमिलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें लिखना भी पड़ेगा वहां पर. ओके, उसी तरीके से तीसरा वाला आपका आता है एस टेस्ट. ओके,
यानी कि दो साइड का रेशियो, कोई भी दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल। तो सपोज मैंने ये दो साइड ली है, ए बी और बी सी, ओके, ए बी अपॉन एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन, सपोज मेरे पास ये दो है, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल कौन सा है, बी, एंड मेरे पास ये होना चाहिए देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये तीन चीज मेरे पास होनी चाहिए। ओके, सिमिलरिटी में भी वही है, थ्री एलिमेंट्स को हम प्रूव करेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो पहला वाला टेस्ट कौन सा है, ए ए, तीन के बदले में हम दो भी करेंगे तो चलता है। ओके, इट इज अलाउड बिकॉज automatically third angle is always equal. So the first test of similarity is AA similarity. The second test of similarity is SSS, that is all three sides are proportionate, then triangles are similar. So that is there. And the third test is called if two sides are proportionate and included angle, जो जैसे था वहां पे मैं अपना कॉन्ग्रेस में उसी तरीके से जो बीच का एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल जो होता है, इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसए टेस्ट। तो इसमें ये दो का बहुत कम यूज है, सबसे ज्यादा यूज ये है। तो इट्स वेरी शॉर्ट, जैसे आपके कॉन्फ्रेंस के प्रूफ बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उस तरीके से यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो यू विल लव इट बिकॉज दीज आर वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल प्रूफ्स, काफी सिंपल है। बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू नो दैट आई ऑलवेज टेक द क्लास ऑन यूट्यूब so that you revise this concept, आप एक बार और देखिए, समझिए और फिर आप लिखना शुरू कीजिए। I hope this is too clear to all of you. भले ये सेशन अपना थोड़ा सा छोटा रहा हो, okay? I apologize that I was a bit confused with the starting part because मैं दूसरे काम में लग गई, तो I was not able to start it. So I'm very sorry for that. That I got it delayed. The session was delayed, but okay. तो यहाँ पे हमें एक चीज ही लर्न, मतलब बेसिक है, बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे लर्न करनी है, but this is your basic concept of similarity and I hope this is clear to all of you. तो प्लीज एक ही चीज ध्यान रखिए, आप जब भी सिमिलैरिटी स्टार्ट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस को दिमाग में रखिए, बट याद रखिए कि कॉन्ग्रुएंस इज नॉट सिमिलैरिटी। फाइन। दूसरी चीज, आप जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे क्या कहते हैं आपके साइंस और उसमें डिफरेंशिएट करते हैं ना, राइट? तो आप डिफरेंशिएट किसके बेस पे करते हैं, अलग क्या है इसमें, डिफरेंट क्या है, दूसरा उसमें सिमिलर क्या है, इजंट इट? कोई दो चीज को कंपेयर करनी है तो आप कैसे करते हैं, तो एक तो उसकी सिमिलरिटी देख के, एक तो उसके डिफरेंसेस देख के। तो ये जो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस है वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है? सो प्लीज गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेसिक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स है, डेफिनेशन है। तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसमें क्विक रिकैप ले, ओके? तो what are the similar figures? First of all, what are similar triangles? Definition or test of similarity. So I hope this is clear to all of you. You have understood this lesson well. कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 मुझे पूछिएगा, you WhatsApp me and we would discuss it. Next test next class we are going for further about solving the sums on this, okay? So we will be meeting next time. Any doubt you can send it. And just one favor, today's attendance you pass me on WhatsApp. You just write your name, class division and present on WhatsApp, please. Okay, I hope you understood it. Thank you, children. Any doubts you can. Thanks a lot. Goodbye. Good day and goodbye. Go together. Thank you.